Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is your lecture number 5. This lecture number 5 is about the efficiency of the financial market. In this particular lecture, we are going to discuss whether the financial markets are efficient and what exactly we mean by efficiency and how different people define this efficiency along with the possibility of having an efficient market. Because there are very strong difference between the economists and financial experts about the belief that the financial markets are efficient or not. Because there are two actually very distinct schools of thought. One of the schools of thought assumes that the financial markets that we have are not efficient, whereas the other school of thought, which is equally strong, assumes that the financial markets are efficient. Okay, so what exactly we mean by efficiency into the financial markets? I hope you have studied about the efficiency, about the allocation of resources. When you start studying economics, you learn what exactly we mean by efficiency, and this efficiency is defined as the maximum allocation of resources. Sometimes we also, when we say efficient allocation of resources, by this efficient, we also mean technical efficiency. And this technical efficiency generally means the ratio of input and output. How much input you are putting in and what kind of output you are getting out. So if your input is low and output is high, it means that you have an efficient economic system. Like a car in which you put petrol. When you put a petrol in the new car, this gives you higher mileage. So the new cars are more efficient than the old cars. Like say, for example, if you put 1 liter in a new car, 1 liter of petrol in a new car and 1 liter of petrol in the old car, you can assume, like you can see that there is a very great difference between the mileage that you get from the new car and the mileage that you get from the old car. Generally, the mileage that you get from the new car is higher than the mileage that you get from the old cars. So this is actually a technical efficiency which we define as the ratio between the inputs and outputs. But what exactly we mean when we say the financial markets efficiency? If you remember the basic microeconomic market structure, that is the perfectly competitive market structure or perfect competition in microeconomics, one of the assumptions and very strong assumptions of the perfectly competitive market is that the markets have complete and perfect information. When you have complete information in the market and when you have perfect information in the market, this perfect information always have got very, very strong role to play. Like say, for example, like if you have a efficient market, if you have got like perfect information in the market, no one can get undue advantage from others. Like say, for example, look at a deal that you have got in the old car market. Like say, for example, in the old car market, one person actually buys the car, the other person sells the car. The person who buys the car is the person who actually does not have got information about the condition of the car. But the person who is selling an old car, he knows what kind of car is this. Is this a good car or bad car? Is this a well-managed car or badly managed car? It is it is a well taken care car, or it is a less taken care car. What kind of accident it has had, what kind of ditches it has gone into, and how you have driven over the time. You have got more information than the other. So what happens when you have got less information as compared to the person who is selling you the car? You might end up on buying a bad car. You might end up on buying a car that actually is not good for you, because you are actually being sold a car about which you exactly don't know what exactly kind of information it has. But in the contrast of this particular example, if both of you have got complete information about the car and you have got equal amount of information about the car, no one can make actually undue advantage. Nobody can take undue advantage from the situation, and nobody can get undue profits from this particular deal. Okay,
Something similar we mean when we say the financial markets are efficient. This financial market efficiency basically is related to the level of information in the market. Okay, so when you actually have got a complete information in the market, when all the information that is available in the market is incorporated into the prices of the shares. What does that mean actually? Like what happens is, like as I was telling you, that in some of the markets, the information that are available are not perfect. By imperfect information, we mean like, the information that should be there in the market is not available in the market. Think about the same thing about a share. Like say, for example, a company's share that is being traded in the market actually is going to go down or going to go up will be depending on that what kind of information is coming about that particular script. If say, for example, a good news comes into the market, that price of the shares appreciates. If the bad news about the companies come in the market, the price of the share drops. All right. But say, for example, some people have got that information that there's a good news about that particular company's profit. There is a good news about the breakthrough in some research for that particular company. There is some good news that is going to come for that particular company, which may raise the price of that company's share. And if a person holds that information within himself and he does not bring that information into the market or does not tell other people about that information, in this particular situation, what will happen? The person who has got information will buy all the shares available in the market because he knows that right now the shares are undervalued. He can make extra profit because of his information that he has about the, like, a good news of that company. तो वो क्या करेगा कि वो सारे के सारे shares जो है वो खरीद लेगा. Now, the person who will be selling those shares will be at disadvantage. The person who is selling shares will actually, he doesn't know or she doesn't know that the price of this share is going to go up. So what actually happens is that the person basically who is buying those shares will get the benefit and the person who sells the shares actually has got the loss. So at the end of the day, the person who has got more information gets more profit in the market. All right. In contrast to that, if the financial markets are efficient, whatever information one person has, the similar level of information the other person has. And this information is also incorporated into the price. Like say, for example, any information that can increase the price that has already come into the market and that has risen the price. Any information that can decrease the price of share already has come in the market and already decreased the price of the share. So that is what basically happens when you have got an efficient financial market. All right. So it is, like there is a very strong debate in the financial market. So keeping this actually information, driven efficiency in your mind, if you look at the debate in the financial economics literature, you will find that there is a very, very strong debate about whether the financial markets are efficient or not. Now, there is an article being presented on your screen. There's some excerpts from the article, What the Great Pharma Debate Has Taught Us. This is written by Justin Fox. Now, what actually this article is about, what happened during 2013, the biggest prize in economics, that is called the Nobel Prize, was given to two people, and they shared the same year's economic Nobel Prize at the same time. And the ideas of these two people were actually 180-degree opposite. What was happening at that point of time? Like, say, for example, this particular award was shared by एक Nobel Prize So I was telling you the article actually is about the Nobel Prize that was shared by two individuals. और इसकी मजे की बात इस Nobel Prize की ये थी कि इसमें दो लोगों को Nobel Prize मिला एक ही साल में इकोनॉमिक्स के लिए, लेकिन इन दोनों के जो व्यूज थे वो बिल्कुल ऑपोजिट थे. इस तरह मिसाल के तौर पर एक जो उसमें से शख्स था जिसको Nobel Prize मिला, उसका ये आइडिया है कि फाइनेंशियल मार्केट्स एफिशिएंट होती हैं, लेकिन दूसरे शख्स का आइडिया है कि फाइनेंशियल मार्केट्स एफिशिएंट नहीं होती.
तो ये दो लोग थे, यूजीन फार्मा एंड बॉब शिलर. इन दोनों लोगों के जो व्यूज हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एंड दिस एक्चुअली शोज यू that how strong is the contrast in economics about the ideas. Like say, for example, the farmer believed that the markets are efficient, whereas the Schiller actually believed that the markets are not efficient. Now, if you look at this article starts with a surprise statement that it's a little hard to imagine a Nobel Prize in physics being shared by a person like, who actually has got some particular hypothesis and another person who actually is attacking that hypothesis. But in economics, this actually happened when Nobel Committee gave this award to three of four theses like Gene Fama, antithesis Bob Schiller, and synthesis Lars Peter Hansen. All right. This Nobel Prize was actually shared by three people. The two people actually had got a very strong contrasting views about the efficiency of the financial markets. Whereas the third one was actually in the middle of the views. All right. So we are not talking about the Lars Peter Hansen right now. We are talking about the Gene Fama and we are talking about the Bob Schiller. These both people actually have got a very strong contrast and strong actually like thesis and antithesis. The Gene Farmer believes that the markets are efficient, but Bob Schiller believes that the markets are not efficient. Farmer in his paper titled Efficient Capital Markets, a review of theory and empirical work, he actually told the people that stock market prices are hard to predict. And even information about corporate performance and the professional investors generally failed to beat the market. आपको पता है कि कौन मार्केट को बीट करता है? मार्केट को बीट करने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट में सारे के सारे लोग 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कौन सा शख्स ऐसा होगा जिसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10% से ज्यादा होगा? क्या ख्याल है आपका? कौन ऐसा शख्स होगा जिसका प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा होगा? व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस? कि मार्केट में सारे लोग 10% कमा रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा हो? और अगर वो लोग होंगे तो वो कौन से लोग हो सकते हैं वो? जी अफान, आपके ख्याल में कौन से? जी अफान, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? माइक वैसे ही ऑन हो गया आपका. आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है अफान. प्लीज अगर इफ यू कुड चेक योर माइक एंड कनेक्शन. But like say for example, extra information can be actually a person like who can beat the market. But if anyone is not able to beat the market, it means that the markets are efficient. Schiller, actually, who got his PhD from MIT, Massachusetts Institute of Technology, in 1972, devised his own test for market efficiency, asking in a paper published in the American Economic Review in 1981, do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends? Do stock prices move much to be justified by subsequent changes in dividends? His answer, why, yes, they do. Schiller claimed that EMH was one of the, EMH actually stands for efficient market hypothesis, E for efficient, M for market, and H for hypothesis. Schiller claimed that EMH was one of the most remarkable errors in the history of economic thought. What Schiller believed that the people's belief about the efficiency of the financial market is misleading. It's not correct. It's not correct in the sense like, that actually does not happen. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. आपकी मेरी आवाज सही नहीं आ रही है? नहीं सर, लैगिंग हो रही है. It was widely accepted that the stock prices did appear to be much more volatile than the economic and corporate fundamentals that they were supposedly reflecting and predicting.
if it didn't change Farmer's mind, he still contends that those who speak the market bubbles are being intellectually sloppy. All right. What actually is the view that, like, जब crisis आते हैं, देखिए crisis जब market में आते हैं तो markets down हो जाती हैं और बहुत ज्यादा down हो जाती है. और ये crisis कब आते हैं? जब market में efficiency ना हो या information perfect ना हो. क्योंकि उन लोगों के लिए प्राइसेस डाउन होते हैं, वो लोग लॉस में जाते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती. तो दैट इज व्हाट समथिंग वाज द व्यू. और ये बड़े दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हैं इसके बारे में. Now, if you look at the definition of efficient market hypothesis, the efficient market hypothesis is the theory supporting the notion that market prices are in fact fair. Fair market prices कौन से होते हैं? आपके ख्याल में मार्केट कौन से प्राइसेस ऐसे होते हैं जो फेयर होते हैं? भाई आपके ख्याल में जब मार्केट में आप जाते हैं तो चीजों के प्राइसेस हैं, कौन से प्राइसेस को आप फेयर प्राइस बोलते हैं? देखिए, इन लेमैन टर्म्स और इन जनरल टर्म्स आप ये कह सकते हैं कि फेयर प्राइस ऐसे प्राइस होते हैं जिनमें फ्लक्चुएशन नहीं होती. फ्लक्चुएशन ना होने का मतलब क्या है कि फेयर प्राइस वो प्राइस होते हैं जो कि सही प्राइस होते हैं. ना तो वो ज्यादा होते हैं एक्चुअल प्राइस से, ना वो कम होते हैं एक्चुअल प्राइस से. ना वो एक्चुअल प्राइस से ज्यादा होते हैं, ना ही वो एक्चुअल प्राइस से कम होते हैं. वो फेयर प्राइस होते हैं. फेयर प्राइस का मतलब क्या होता है कि वो एक्चुअली ऐसे प्राइस होते हैं जिनकी की जो है वो ना तो उनका प्राइस ज्यादा होता है, ना वो प्राइस कम होता है. दैट्स व्हाट समथिंग इज द फेयर प्राइस. तो EMH कहता है कि मार्केट में जो प्राइस है फेयर है. फेयर का मतलब ये है कि जो प्राइस है वो सही प्राइस है, ना वो ज्यादा है ना वो कम है. अगर वो प्राइस ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में वो कम होने वाले हैं. अगर वो कम है तो इसका मतलब फ्यूचर में वो ज्यादा होने वाले हैं. तो दैट्स व्हाट बेसिकली फेयर प्राइस वो होते हैं जो कि ना ज्यादा होते हैं ना कम होते हैं, बिल्कुल फेयर होते हैं, जिसमें किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा लॉस नहीं हो रहा होता. अंडर द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, सिक्योरिटी प्राइसेस फुली एंड फेयरली रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी. अगर आपकी मार्केट एफिशिएंट है तो आपके जो प्राइसेस हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन को, मार्केट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होंगे उनको रिफ्लेक्ट करेगी. रिफ्लेक्ट करने का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई इंफॉर्मेशन अच्छी है तो वो मार्केट में आ जाएगी और उससे प्राइस बढ़ जाएंगे. अगर किसी कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बुरी है तो वो भी मार्केट में मौजूद होगी और उसकी वजह से जितने प्राइस गिरने होंगे वो गिर जाएंगे. तो जितने प्राइस बढ़ने होंगे वो बढ़ जाएंगे अच्छी न्यूज के आने की वजह से, और जितने प्राइस कम होने होंगे वो कम हो जाएंगे बुरी न्यूज आने की वजह से. तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास सारी वो इंफॉर्मेशन मार्केट में मौजूद हो तो ऐसी सूरत में आपकी मार्केट जो है वो एफिशिएंट होती है. ऑलराइट. Since the 1980s, 60s, I'm sorry, the EMH has been perhaps the most important paradigm in finance. Okay. So there are mixed findings about the efficiency of the financial market. और अभी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों इसमें बिलीव है कि मार्केट्स एफिशिएंट होती हैं और बहुत सारे लोगों का बिलीव है कि मार्केट एफिशिएंट नहीं होती. इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू सी हाउ इंफॉर्मेशन इन द मार्केट अफेक्ट सिक्योरिटीज प्राइसेस. आपको पता है कि जितने भी शेयर प्राइसेस होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन पे. अगर किसी कंपनी के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन आती है तो उसके शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं. किसी कंपनी के बारे में बुरी इंफॉर्मेशन आती है तो शेयर प्राइस गिर जाते हैं. और अगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो देर से आती है तो जिनके पास पहले आ जाती है तो उससे फायदा उठा लेते हैं. लेकिन एफिशिएंट मार्केट में ऐसा नहीं होता कि किसी के पास देर से इंफॉर्मेशन आए. सबके पास सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और सबके पास एक ही वक्त में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. हाउ इंफॉर्मेशन इन द मार्केट अफेक्ट सिक्योरिटीज प्राइसेस. एक्सपेक्टेशंस आर इंपॉर्टेंट इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम्स. आपको पता है कि मार्केट में जो सबसे ज्यादा जो रोल है वो है एक्सपेक्टेशंस का. एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे जो सट्टा होता है, सट्टे से मुराद ये है कि आप जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में आपकी मार्केट ऊपर जाएगी या फ्यूचर में मार्केट आपकी नीचे जाएगी. तो दैट्स व्हाट बेसिकली एक्सपेक्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट. एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न मिलने वाला है, क्या रिस्क होगा, कितनी लिक्विडिटी होगी, ये सब चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं कितने आप शेयर्स खरीदते हैं और कितने आप शेयर्स नहीं खरीदते.
इसके अलावा इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस आल्सो इम्पैक्ट द बॉन्ड प्राइसेस। अगर आपको याद हो, जब हम डिस्काउंटिंग का प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपके पास इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो आपका डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा, आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बॉन्ड की कम हो जाएगी। Expectations not only affect our understanding of the markets but also how financial institutions operate. तो ये जो expectations हैं ये हमारे जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स की वर्किंग और उनके ऑपरेशंस दोनों को जो है वो अफेक्ट करते हैं, और वो हम देखें किस तरीके से करते हैं। To better understand expectations, we examine the efficient market hypothesis. हम इसको एग्जामिन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सपेक्टेशंस के प्रोसेस को हम एग्जामिन करने जा रहे हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, एंड वी विल बी लुकिंग एट द फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल एंड व्हाट इज नॉट. However, we need to validate the hypothesis with real market data. The results are mixed. देखिए जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन मार्केट्स, एफिशिएंट मार्केट, आई एम सॉरी, ये हमेशा टेस्ट होती है मार्केट में डेटा के साथ. तो डेटा के साथ अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो मिक्स आएंगे. कहीं पे आपको मार्केट में एफिशिएंसी मिलेगी और कहीं पे आपको एफिशिएंसी नहीं मिलेगी. आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू गाइस, राइट? आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. In summary, we will look at the basic reasoning behind the efficient market hypothesis. We also examine empirical evidence examining this idea. और यहाँ पे जो चैप्टर होंगे उसमें जो चैप्टर में जो टॉपिक है उनका ताल्लुक है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस से, एविडेंस उसके बारे में, और थोड़ा सा बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में हम बात करेंगे. देखिए यहाँ पर जो पहला जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला जो है वो आपके पास रिटर्न का है. आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट में और रिटर्न में फर्क होता है. इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ एक कूपन इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो गेन होता है, टोटल जो रिटर्न होता है, वो एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो है कैपिटल गेन. और कैपिटल गेन डिफरेंस होता है फ्यूचर प्राइस में, ये फ्यूचर प्राइस है और ये करंट प्राइस है. आप कितने का खरीदते हैं और फ्यूचर में कितने का बेचते हैं. जितने का आप बेचेंगे, मिसाल के तौर पर आज एक शेयर आप खरीदते हैं 100 रुपए का, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप एक फ्यूचर में इसको 120 रुपए का बेचते हैं, तो एक शेयर पे आपको जो फायदा होगा वो 20 रुपए होगा. और अगर इस दौरान, जिस दौरान आपने वो शेयर रखा हुआ था, उसमें आपको डिविडेंड मिलता है, तो वो एक तरह के कूपन रेट होगा या आपके पास डिविडेंड होगा. तो आपका टोटल रिटर्न जो है वो डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर, एक तो कैपिटल गेन पे और उस पर रिटर्न पे. जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक मकान खरीदते हैं 10 लाख रुपए का और एक साल तक अपने पास रखते हैं और एक साल तक उसको आप रेंट पे देते हैं, और एक साल में आपको जिससे जो रेंट मिलता है वो 50,000 रुपए मिलता है, और एक साल के बाद वो आप 15 लाख रुपए का मकान बेच देते हैं, तो एक्चुअली जो है वो आपका प्रॉफिट ना तो 5 लाख है ना 50,000 है, बल्कि दोनों को मिलाकर है 5,50,000. तो 5,50,000 आपका प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे. 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, ये वो प्राइस है जिसपे आपने वो मकान जो है वो खरीदा है. बिल्कुल इसी तरीके से ये रिटर्न्स हैं. और ये जो रिटर्न्स हैं, ये कौन से रिटर्न्स हैं आपके? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और एक्चुअल रिटर्न्स कब बराबर होंगे आपकी नजर में? जो आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न्स और जो आपके एक्चुअल रिटर्न्स हैं, वो कब बराबर होंगे या कब बराबर हो सकते हैं? When your actual returns are equal to your expected returns. Expectations equal to optimal forecast. We form rational forecast based on available information. That means if all information are available in the market, then your expectations will be met with your required like actual information, actual returns. Because like say for example, अगर आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेंगे लेकिन आपके प्राइस कम हो जाते हैं, वो इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में प्राइस कम होंगे लेकिन वो प्राइस बढ़ जाते हैं, और वो बढ़े इसलिए और कम क्यों नहीं हुए क्योंकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी. तो इन दोनों सूरतों में वो मार्केट एफिशिएंट नहीं है. अगर मार्केट एफिशिएंट हो और आपके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, तो ऐसी सूरत में जो भी आप एक्सपेक्ट करेंगे वही मार्केट में होगा. if and only if you have got perfect information. Expectations equal to optimal forecast. We form rational forecast based on all available information implies that expected future price is equal to optimal forecast future price. ये जो OF है PT plus 1 पर, this is OF actually stands for optimal forecast. Okay.
So expectations equal to optimal forecast. It implies that expected future price is equal to optimal forecast future price. अगर इस तरह से होगा तो actual expected return will be equal to optimal forecast return. Expected return will be equal to what? Optimal forecast return. तो मार्केट जो इक्विलिब्रियम रिटर्न होगा वो होगा जो कि ऑप्टिमल फोरकास्ट रिटर्न होगा. यानी ऐसी सूरत में अगर आपकी मार्केट्स एफिशिएंट हैं, if your markets are efficient, everybody will be getting the optimal forecast return.